So very good afternoon, everyone. So on a very good Sunday. So first of all, let me introduce myself. My name is Shashikanth Korravath, and I hail from the Mahabubnagar district of Telangana region. So I did my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mahabubnagar district, and thereafter I completed my graduation from Hyderabad in electrical and electronics engineering. And uske baad I also did my masters in rural development from Indira Gandhi National University. So where I had topped the university in my branch with 95% in the PG. And subsequently, I was preparing for UPSC after my graduation. तो मैंने बहुत सारे जॉब्स मिला था मेरे को एंड राइट आफ्टर माय कॉलेज मेरे को इन्फोसिस में प्लेसमेंट मिला था एज अ सिस्टम्स इंजीनियर. I didn't join the private sector because I was always of the firm belief that I should work for the government and contribute myself for the nation building. तो इसी हिसाब में I gave multiple exams, and with multiple exams I have cleared multiple different jobs. Like I got jobs in every other sector in the country. Like I cracked many bank exams. I cracked NABARD exams. I cracked technical exams. Being an electrical engineer, I have cracked other exams like Steel Authority of India Limited, GAIL, NTPC, etc. But however, I was of the firm belief that I should prepare for civil services and give my best for the development of this nation. So thereafter, I decided to leave all the jobs. I have not joined any of these jobs, and then I started preparing for the civil services examination. So with my first attempt, I went to the mains. I cleared prelims in my first attempt, and uske baad I have cleared all the prelims till this time, and I appeared in 8 mains till now, and I have appeared in 5 interviews, and I have been selected by the UPSC finally 2 times in the 2018 exam and in the 2019 exam. 2 times have secured rank in the UPSC out of the 5 interviews that I gave. So in the 2018 exam, I was allotted to the Indian Railway Traffic Service, and in the 2019 exam, I was allotted to the Indian Defence Estate Service, IDES bolte hai usko. So, but I stick with the railways because I thought railways will give me more exposure to the real world. So that's how currently I'm posted in Assam, a very beautiful place, a division called as Rangia Division, where my division spans from towards the north bank of Brahmaputra completely. It includes north bank of Assam, the northern part of Assam, complete Arunachal Pradesh, and then Meghalaya. So it's a very big division with almost 1,000 kilometers of track length. Like that, railways has given me an opportunity to work in the northeast and also to look at the cultural diversity and also to enjoy living in such a pleasant part of the country. Now, coming to my preparation, so I started my preparation in 2013, and I gave my first interview, first attempt in 2013. I cleared that, and uske baad I started writing. But initially, my optional was geography. My optional geography था, and उसके बाद somehow geography was not working for me. मेरा geography से बहुत खराब चल रहा था, and instead of giving multiple interviews with geography, I could not clear with geography because I was getting very low score. So that's why I would say aspirants should always take a right optional which is to their interest. At the same time, please check whether it is giving you marks or not. If you take some subject optional which is out of interest, but again if it is not giving good returns in the long run, so I think there you have to be very alert. Okay, so इसीलिए always try to choose such a subject which will give you maximum marks and which you feel like reading it multiple times, so that even if it is boring, you should be able to tackle with it. Okay, so coming to my prelims journey, so I have appeared in the prelims exam 8 times and then cleared all the 8 times, because I feel prelims is such an exam these days. Especially prelims has become more of an elimination test, okay, where UPSC will outrightly reject you. Okay, so in isme GS1 and CSAT, as you know, GS paper and the CSAT paper. GS paper, you have 200 questions, and you have to appear, attempt it, and then you have to, the cutoff is less than 100 all the times. So यहाँ पे what helped me always is that you need to fix your sources. You need to fix your sources. So never ever change your sources just because somebody said it. I repeat the point: never ever change your sources
बिकॉज समबडी सेड इट। सर मेरे दोस्त ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, डीडी बसु पढ़ो। तो हाउ मेनी, वैसे अगर कोई और दूसरा दोस्त बोलेगा तो दूसरा पढ़ लोगे, और कितना पढ़ोगे वैसे? So how many times will you change your optional, or will you change your sources? So stick to one source, okay? Stick to one source always, and read it multiple times. I always believe in one funda which was told to me by one of my teachers: read one book 10 times rather than reading 10 books one time. Read one book 10 times rather than reading 10 books one time. It will be of great advantage if you read one book 10 times, because every time you read the same book, it gives you a new perspective and you tend to remember things. And according to our psychology, we have this something, our power called as the photo memory. Photo memory is, अगर आप एक चीज को दोबारा देखोगे, मल्टीपल टाइम्स देखोगे, यू विल रिमेंबर इट ऑटोमेटिकली। Okay, there will, you'll get an impression of the picture in your mind, so that you'll be easily remembering it. Okay, अगर इसके opposite में, if you feel like, or if you do the opposite thing wherein you are reading 10 books only one time, कितना याद रहेगा आपको बताइए? You'll never be able to remember them. Okay, so make sure that you read multiple times the same source. So fix your sources first of all, whatever the source might be. For example, like, since my first attempt, I have been reading Lakshmikant only for prelims. Okay, I know that prelims Lakshmikant के अलावा हो ही नहीं सकता. So then only Lakshmikant. So in that way, you should always fix your sources and go for that source, and read it multiple times, revise it multiple times, again and again. Only then things will get, filtered into your mind. Okay, and uske baad CSAT. These days CSAT has become such a tough exam. I'm telling you, such a tough exam. Only when you sit to the exam, you sit in the exam, you'll understand the significance. सो सी सैट में क्या होता है कि सी सैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर दीज डेज, एंड उसमें एलिमिनेशन का इतना स्कोप बना दिया यूपीएससी ने आजकल, इतना कठिन कठिन पेपर देके, तो इसलिए आपको सी सैट के लिए एक तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, ये वेन एवर यू गेट अ चांस टू, आप यूपीएससी का प्रीवियस पेपर्स देखो, उसमें आपको समझ में आएगा कि कई थीम्स होते हैं इन द प्रीलिम्स। सीसैट पेपर में कई थीम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम एंड वर्क का एक थीम है। मान लो आप लास्ट 5 इयर्स का पेपर से देखो, टाइम एंड वर्क का एक या दो क्वेश्चन हर साल होते हैं। ओके, दैट इज वन थीम हो गया। एंड सेकंड थीम हो गया आपका डिस्टेंसेस, और थर्ड हो गया आपका ट्रैवलिंग, वो नॉर्थ 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 ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो ट्रैवल करने वाला। ओके, सो ये दिस इज अ पैटर्न इन विच यूपीएससी इज आस्किंग यू। सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई सच पैटर्न, एंड जैसे टॉपिक्स को नोट डाउन करके, उसके बाद उसको एकदम अच्छे से आप कहीं ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, या यूट्यूब में इतने सारे फ्री सोर्सेस है, किसी को भी फॉलो कर लीजिए। Ultimately, you have to remember things and you have to practice. CSAT is a matter of practice. Take it for granted. CSAT is a matter of practice. जितना प्रैक्टिस करोगे CSAT में, उतना ही सफलता मिलेगा तुम्हें। Okay, and moreover, CSAT is not a month affair. CSAT is not a 2 months affair. CSAT is a year-long affair. I'm telling you that once again. CSAT के लिए आपको पूरा साल में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। CSAT के लिए करते ही रहिए। सीसैट के लिए दिन में 1 या 2 घंटा निकालिए हर दिन, एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स वर्थ एवरी मिनट दैट यू आर गिविंग इट। क्योंकि जितना आप सीसैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको दूसरा एग्जाम्स के लिए उतना ही आसान हो जाएगा, जहाँ पे मैथ्स एग्जाम है। आजकल तो कोई भी एग्जाम ले लीजिए, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम लीजिए या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हर हर एग्जाम में अभी तो मैथ्स इज ऑलमोस्ट अ कंपल्सरी पार्ट। एप्टीट्यूड मैथ्स आना ही आना है। तो इसीलिए यू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, और टाइम स्पेंड करते ही यू गेट अ गुड नैक ओवर इट, एंड उसके बाद यू कैन इजीली लर्न थिंग्स। यू कैन इजीली लर्न थिंग्स। ओके, इसके बाद फिक्स योर सोर्सेस, एंड सीसैट के लिए भी वही बोलूंगा, फिक्स सोर्सेस को फिक्स कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिविजन कीजिए, प्रॉब्लम्स कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, और नए नए प्रॉब्लम्स करते रहिए। पिछले सालों का एग्जाम पेपर्स देख लीजिए, एंड नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, ट्राई टू लुक एट अदर पेपर्स एज वेल। जैसे सीएपीएफ का एग्जाम हो गया, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो गया, जैसे सीडीएस का हो गया, एनडीए के हो गया। सो यूपीएससी कंडक्ट्स दीज मेनी एग्जाम्स। सो जितने एग्जाम्स कंडक्ट करती है, यू शुड ऑलवेज गो थ्रू ऑल दीज पेपर्स, ताकि यू अंडरस्टैंड यूपीएससी कैसे पूछता है क्वेश्चंस कोई भी चीज में।
ओके, दैट्स अ तुम्हें अच्छे से ये नॉलेज मिलेगा कि यूपीएससी सीसैट में कैसा पूछ रहा है एंड उसमें से आप क्या कर सकते हो और कितने कितने अच्छे से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज मेंस ऐसे पेपर। ऐसे एक ऐसा एरिया है कि विच इज माय वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज इन माय मेंस प्रिपरेशन। एंड वेरी फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे में कभी भी एवरेज एंड अबव एवरेज मिलते थे। आई नेवर हैड लेस देन लाइक 100 110 कभी भी। सो हाईएस्ट वंस आई गॉट वाज लाइक 148 एसए में जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था। सो एसए ऐसा पेपर है कि जहाँ पे इट्स अ ओपन प्लेग्राउंड, जहाँ पे तुम्हें यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट बट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एक ही ऐसा पेपर है जिसमें आपको 250 में 150 भी मिल सकता है और 100 भी मिल सकता है। 250 में 100 भी मिल सकता है, 150 भी मिल सकता है। मतलब एक पेपर में 50 मार्क का डिफरेंस आपको कहीं और दूसरा पेपर में नजर नहीं आएगा। On an average, the marks that you get in your essay in your GS papers is 100. The max is 100, 110. लेकिन the maximum marks जो आप essay में देखते हो, it is 150, 160 भी आए हुए हैं लोगों को, 170 तक आए हुए हैं। तो which means that there is an ample scope for you to score very well in the essay paper। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, एंड ट्राई टू लुक एट अदर टॉपिक्स। दूसरे प्रीवियस टॉपिक्स को देखो, उसमें ब्रेनस्टॉर्म कीजिए पहले कि ये टॉपिक में आपका टेक क्या होगा, आपका ओपिनियन क्या होगा ए टॉपिक पे। वंस यू नो द ओपिनियन ऑन द टॉपिक देन यू कैन इजीली गो इनटू द राइटिंग। उसके लिए आपको मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे एवरीबॉडी सेज दैट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। सो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर टॉपिक को। सो व्हेनेवर अ टॉपिक इज गिवन टू यू, उसको आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए और उसको एकदम अच्छे से लिखिए। सो एसे इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एग्जामिनर एंड अस। तो एसे में एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखिए, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, एकदम सिंपल सरल इंग्लिश में लिखिए एंड कन्वे व्हाट यू आर थिंकिंग टू द एग्जामिनर। दैट्स इट, इससे ज्यादा सोचना नहीं है, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, एंड उसके बाद उसके लिए सोर्सेस का मैं बोलूंगा कि विजन आईएएस और दूसरे कई इंस्टीट्यूट्स का जो पेपर्स निकलते हैं, लाइक दे हैव सम मटेरियल ऑनलाइन। अगर तुम्हें कहीं मिल गया टेलीग्राम में या उनके साइट में मिल जाता है कभी कभी, तो उनको उठा लीजिए और उनको देख लीजिए। और हर एक टॉपिक पे थोड़ा सा फॉर्डर बना के रखिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया है, उसके बारे में मेक सम बेसिक डेटा, लाइक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन हेल्थ, एमएमआर कितना है, आईएमआर कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, सेक्स रेशियोज कितने हैं। एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो ड्रॉप आउट रेशियो कितना है, परसेंटेज जीडीपी कितना है, टॉप इंस्टीट्यूशंस कितना है, एंड व्हाट इज द लिटरेसी रेट। सो इन दैट वे यू नीड टू हैव दोज फैक्ट्स विद यू ऑलवेज। आपके पास अगर फैक्ट्स नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वे व्हाट यू आर सेइंग टू द एग्जामिनर। ओके, उसके लिए अच्छे से नोट्स बनाना जरूरी है। एंड कभी कभी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज भी आते हैं। You try to note down them in your notes and you can use them in your answers। एंड इसके बाद मेंस के लिए जीएस 1 2 3 4। GS1 के लिए फिक्स योर सोर्सेस। अगेन व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू, ऑलवेज फिक्स योर सोर्सेस। सोर्सेस को चेंज कभी मत करना, फिक्स द सोर्सेस। ठीक है। GS1 के लिए आई मोस्टली फॉलोड एनसीईआरटीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि वहां पे तो पूरा स्टैटिक पेपर्स ही है। ज्योग्राफी 11th क्लास एनसीईआरटीज, 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटीज, सोसाइटी का भी 11th एंड 12th एनसीईआरटी है, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी है। एंड प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ते हैं हम इंडियन हिस्ट्री, वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आप। एंड आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स के लिए जो भी पढ़ते हैं उसका यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। एंड GS2 के लिए यू हैव टू यूज द नॉलेज ऑफ प्रीलिम्स पॉलिटी। एंड एट द सेम टाइम मैंने विजन आईएएस का एक मटेरियल पढ़ा था कि वैल्यू एडेड मटेरियल, व्हेन आई हैव जॉइन द टेस्ट सीरीज उन्होंने दिया था, तो आई फाउंड इट टू बी वेरी वेरी गुड सोर्स। तो अगर आपको देखना है तो वो देखो, नहीं तो शून्य का एक कंपाइल्ड नोट्स आया हुआ है, शून्य आईएएस का, वेर इन फोर बुक्स दे हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग इनटू 4 बुक्स, वो भी आप देख सकते हो। बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज आपके पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, सोर्स होना जरूरी है। बट ऐसा भी नहीं है कि हर टॉपिक के लिए आपके पास 10 10 सोर्स है। नेवर डू दैट मिस्टेक, बिकॉज इतना पढ़ने के बाद यू विल नेवर बी एबल टू रिमेंबर। ओके, सो मेक श्योर दैट
मेक श्योर दैट यू हैव फिक्स्ड सोर्सेस टू एवरी टॉपिक. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इफ आई हैव टू रीड अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं बस एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई हैव लिमिटेड कैपेसिटी एंड मुझे उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड मैं आई कांट इवन रिमेंबर बियॉन्ड दैट. आई हैव दैट इन माई माइंड सेट कि दिस इज वॉट आई कैन डू. आई नो वेरी वेरी क्लियरली मुझे कितना याद होगा, मुझे कितना पता होगा, मैं उतना ही पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा I'll never be able to do it, and I never want to take that extra burden. Okay. एंड उसके बाद GS3 के लिए, GS2 में IR के लिए फॉलो द करंट अफेयर्स. कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, जैसे टू नो द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप्स एंड पास्ट इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में. एंड उसके बाद यू कैन फॉलो द करंट अफेयर्स फॉर द प्रेजेंट हैपनिंग्स. एंड अगेन GS3 इकोनॉमी में you can just go through what you have read for your prelims, your class notes and your NCERTs etc. and उसके बाद current affairs तो है ही है, current affairs को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा. And again security issues के लिए there is the Tata McGraw-Hill book which is very very important, good book written by Ashok sir, Ashok Kumar IPS sir, who is presented DGP of Uttarakhand. So and उसके बाद disaster management and then environment. You have to read all these topics. And I'm telling you once again, mains के लिए the key is to have your own notes. If you want to crack mains and sit for the interview, then you need to have your notes. You cannot rely on some other anybody's notes कि मेरे पास ये टॉपर का नोट्स है, मेरे पास ये टॉपर का नोट्स पड़ा हुआ है. That won't help you because topper's notes is always written from their perspective, not from your perspective. Okay. And you will be able to appreciate it only when you have written it. तो इसीलिए you take help of topper notes, not a problem, but make sure that you always make your own notes out of it. ओके. उसके बाद एथिक्स के लिए, एथिक्स आई कैन सजेस्ट वन थिंग इन अ बेटर फैशन, बिकॉज मेरा एथिक्स में करीब बहुत कम नंबर आते थे इनिशियली, लाइक 60s 70s 80s, नॉट मोर देन दैट. बट 2018 में आई गॉट 126, 2019 एग्जाम में आई गॉट 129 समथिंग लाइक दैट. ओके. वैसे क्या हो कि व्हाट इज द डिफरेंस दैट आई हैव ब्रॉट इन माय एथिक्स इज दैट आई वाज लुकिंग एट एथिक्स एज अ वेरी थियोरेटिकल पेपर. एकदम थियरी के पेपर के जैसा देख रहा था मैं एथिक्स की. इसमें तो ये लिखना है, वो लिखना है, दुनिया भर का डेफिनेशन लिखना है, स्कॉलर को लिखना है. आई दैट वाज माय इनिशियल अप्रोच. उसके बाद मुझे somehow I got that realization by reading toppers copies and reading meeting friends and test series, जहाँ पे I got this realization कि ethics is not about scholars, ethics is not about theory, ethics is about the practicality. How do you apply everything, वो मैटर करता है एथिक्स में. एथिक्स में यहाँ पे आपको बस अरिस्टोटल को एक दो बार यूज करो, इतना ही काफी है. इसका मतलब नहीं कि पूरा एथिक्स बस अरिस्टोटल सोक्रेटिस यही लिखते रहो, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड how are you intercepting ethics, how are you using these ethics in your life, and what do you understand by ethics in your life, and how do you apply it onto the real world. That is what they are saying in ethics. तो उसके लिए आपको एथिक्स को समझना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, आई यूज टू रीड लेक्सिकन पढ़ रहा था, सुब्बाराव पढ़ रहा था. उसके बाद व्हाट आई डिड इज, ये दो नोट्स एक बार पढ़ के, टेक्स्ट बुक्स मैंने एक बार पढ़ के, आई स्टार्टेड मेकिंग माय ओन नोट्स. इतना सिंपल नोट्स मैंने बनाया था. एथिक्स, द राइट और रॉन्ग ऑफ डूइंग समथिंग इज एथिक्स. मोरालिटी और मोरल वैल्यूज, द एस्पेक्ट ऑफ डूइंग राइट और रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू फ्रॉम वन सेल्फ. इतने छोटे एग्जाम्पल मैंने, इतने छोटे डेफिनेशंस मैंने खुद बनाया था by reading other sources. उसके बाद I never touched those books again. I only used to keep revise my own notes because my notes is written by me and is written according to what I understand from ethics. And मैंने अच्छे से हर एक वर्ड को दो तीन एग्जाम्पल्स रखे रहे थे. फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी में माई एग्जाम्पल इज ऑलवेज सचिन तेंदुलकर going out of the crease even before empire gave out. That is his integrity. That is one example. Negative integrity or bad integrity is corruption of any other case. Okay. So in such a way, compassion, Mother Teresa, and dedication, Abdul Kalam. So there are these examples which are always ready with me. इसका मतलब है कि मैं एग्जाम में जाके कभी सोचता नहीं था.
I used to think before the exam, and I made a list of those examples, and I used to use those examples in my exam again and again. Okay, so that's how I gained good marks in ethics uske baad. And more importantly, what matters in your mains exam is, what matters in your mains exam is the time. तो उसके लिए राइटिंग ज़रूरी, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम डे 1। कहीं पे भी क्वेश्चंस उठा लीजिए, लाइक आई यूज्ड टू डू इट फ्रॉम इनसाइट्स आईएएस। उनका डेली आंसर राइटिंग मॉड्यूल है, सो आई यूज्ड टू राइट देयर आंसर्स एवरी डे। सो आई यूज्ड टू चेक विद अदर एस्पिरेंट्स, दूसरे 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 लोग जो अपलोड करते थे उनके साइट में। आई यूज्ड टू चेक विद दोस पीपल कि वो कैसे लिख रहे हैं, एंड व्हाट इज़ हाउ आई एम राइटिंग इट, वेयर इज़ द डिफरेंस, कहाँ पे आई कैन ब्रिज माय गैप. So I can do all these things. I used to do these things. Okay. And usually current affairs, what you can do is like 1 year before the exam, go with that approach. 1 year before the exam. If you are writing like 24 exam is in like May or June. So uske liye one year is a good time. Okay. 1 year will be a good time. And uske baad interview ke liye, interview is a very important stage of the exam. I fortunately I was able to sit in the interview for multiple times, and have been getting good marks in the interview as well. तो वहाँ पे इंटरव्यू में व्हाट मैटर्स द मोर इज योर पर्सनालिटी, व्हिच कैन नॉट बी मेड ओवरनाइट. सो आप लोग, यू आर एट द राइट एज एंड राइट टाइम, दैट अच्छे से पर्सनालिटी अपने आप को शेप करिएगा. बी एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स, एंड you should be able to explain things in a better way, and you have to express yourself. आपको जो कुछ भी आपके मन में जा रहा है ना, मन में आप सोच रहे हो, you should always be able to express it properly. आप बाहर बोलना चाहिए कि आपके मन में क्या है. ऐसा नहीं है कि एकदम रफ के लैंग्वेज में. यू हैव टू यूज प्रॉपर लैंग्वेज. किससे बात कर रहे हो देख के उस हिसाब से बात करना पड़ेगा. इफ यू आर स्पीकिंग टू एल्डर पर्सन, हम्बल बात करना पड़ेगा. इफ यू आर स्पीकिंग विद योर सबऑर्डिनेट स्टाफ, उनको थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा. इफ यू आर स्पीकिंग विद अ लेमैन और अ पर्सन विजिटिंग टू इन द ऑफिस, उनसे थोड़ा रेस्पेक्टफुली बात करना पड़ेगा. So there are multiple communication channels. So you have to be very observant while communicating with anyone who is coming to you. So in this way you have to express your feelings, and it's all about your body language. आप body language कैसे रख रहे हो? Are you confident in your body language, or are you too shy a person? Okay, or you not able to take the pressure? So इन चीजों को समझ के थोड़ा सा पर्सनालिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है. ओके. एंड उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए जैसे मैंने बोला था, यू कैन फॉलो एनी वेबसाइट लाइक इनसाइट्स ऑन इंडिया, आईएएस बाबा एटसेट्रा. सो आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ देम. एंड करंट अफेयर्स के लिए आई यूज्ड टू मोस्टली फॉलो विजन आईएएस. उनके जो मंथली मैगजीन्स होते हैं, आई यूज्ड टू डिलीजेंटली फॉलो, बिकॉज एंड उसमें ये डाउट मत रखिएगा कि इफ आई सेड फॉलो एक्स करंट अफेयर सोर्स, देन यू आर फॉलोइंग वाई करंट अफेयर सोर्स. नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू फॉलो माई सोर्स ओनली. Not necessary. Follow one source which suits you. That's it. Again, यहाँ पे the same funda. Follow one source. Don't follow multiple sources. We are not here to make the business. Okay. हम यहाँ पे पढ़ाई करके निकालने के लिए आए. We are not into the process of quality checking कि इसका नोट्स कैसा है, उसका नोट्स कैसा है. ये क्वालिटी चेकिंग करना अपना काम नहीं है. अपना काम है पढ़ना और एग्जाम निकालना है बस. ठीक है. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी मत छोड़िएगा. सो प्रीलिम्स एंड मेंस, आई वुड से देयर आर टू बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर प्रिपरेशन. एक होगा आपका सिलेबस, दो होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके. सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा आपके पास होना चाहिए. सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा आपके पास होना चाहिए. ओके. सो यू शुड ऑलवेज हैव योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस विद यू, सो दैट इट एक्ट्स एज ए रेफरेंस. मान लो आप पार्लियामेंट के चैप्टर पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत में, आप पढ़ ही रहे हो, आपको समझ में नहीं आया कि एक ये इतना पढ़ने के बाद इसमें से क्या पूछेगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा. अगर आपको समझ में नहीं आया ये बात, तो आपको पढ़ के क्या फायदा होगा इससे. तो इसीलिए यू शुड ऑलवेज फॉलो द प्रीवियस ईयर सोर्सेस. You should always follow your previous year sources. Okay. The previous year questions. So look at the previous year questions. Parliament में कैसे कैसे चीज पूछा जा रहा है, and इसके लिए आंसर्स क्या हो सकते हैं, and try to attempt the previous year questions. When you attempt the previous year questions, it gives you a lot of confidence. I am telling you with my experience. तो let's say आप अगर मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें से कोई आंसर अटेम्प्ट करो, एंड देन you'll अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि आप कितना लिख पा रहे हो, कितना नहीं लिख पा रहे हो, व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. एंड देन कोचिंग
I feel coaching is, if at all, if you are able to afford it, go for coaching. अगर आप afford नहीं कर पाते, coaching ऐसा भी नहीं है कि बहुत sacrosanct है और होना ही है, वैसा वैसा चीज़ कोई नहीं है। लाइक इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर इट। लेकिन आजकल इतना इन्फॉर्मेशन बह बह रहा है ऑनलाइन में, तो आपको एकदम बहुत सही करके करना पड़ेगा कि बी वेरी ऑब्जर्वेंट। ऐसा मत कीजिए कि एक टॉपर ने ये बोला, दूसरा टॉपर ने ये बोला, तीसरा टॉपर ने ये बोला, ये सब इकट्ठा करेंगे, वैसा मत करना। गो विथ वन ओपिनियन, फॉलो वन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज बीच रास्ते में कभी चेंज मत करना। If you have started your journey from point A to point B, UPSC, fix the journey. Don't change your destinations in between. कि यहाँ जाने के बाद ये करूँगा, वहाँ जाने के बाद तो ये टॉपर ने ये बोला, ये कर लूँगा मैं, वैसा मत कीजिए। Fix one source, fix one strategy, believe in your strategy. The main part for success is how do you fix your strategy and how do you believe your strategy. वहीं पे actually you can actually bring much change in your preparation. Okay. And NCERT is new or old, it depends यार। देखो इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिक्स वन सोर्स, न्यू और ओल्ड कोई भी फिक्स कर लो। NCERT अभी भी नया बना रहे हैं। ओके, एंड विच आर रिवाइज्ड वर्जन, सो फिक्स एनी वन सोर्स, इट्स ओके। ओल्ड भी पढ़ो या न्यू भी पढ़ो, बट गो विथ वन सोर्स। डोंट अननेसेसरली गेट एम्ब्रॉल्ड इनटू this situation where you're not able to decide the source itself, वो मत कीजिए। ठीक है। And newspaper is a very very important part of your preparation, which is like uh, which you cannot live without. Just like how do you wake up in the morning, brush, eat, sleep, newspaper is also part of your life. ओके। जैसे ब्रशिंग ब्रश करते हैं, जैसे वी विल हैव आवर मील, जैसे वी विल स्लीप, व्हिच इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, न्यूज़पेपर इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके। बस remember the point that you need not go too detailed into the newspapers, because the current affairs which are being covered here will be asked, will be compiled very beautifully in a magazine by some institute. You can use that in magazine. Okay. So unnecessarily don't try to make notes out of the newspapers until unless you feel it is very important. Okay, until unless it is very important, don't make notes. Okay, because you'll have such huge pile of notes, uske baad you are not able to revise them. If you are not able to revise them, you will be very underconfident before the exam. So I don't want you guys to be at that stage. Okay. And newspaper, I used to follow Hindu newspaper as everybody did. Kaise and how do you read newspaper? Don't go into these stupid politics. Okay. So don't follow the politics and all. Just go into the important things which are required for the exam. Okay. So look at your syllabus and try to look at those areas which are important for you. Okay. Let's say for example, Rahul Gandhi's disqualification happened yesterday. So what you can learn from Rahul Gandhi's disqualification yesterday is that what is the rule under which disqualification has been done. Tomorrow there can be a question on disqualification, that so and so rule says under representation of people, and that so and so rule says this is how a member of parliament can be removed or can be suspended. Okay, can be disqualified. What is that rule in representation of people act? Okay. So just go into that. Don't go into whether it is right by the BJP to do it or wrong by the BJP. We are not here to judge them, and we don't want to judge it. Okay. And uske baad magazines, I used to follow Vision IAS magazine, so you can follow anything that you want, but I found Vision IAS very helpful because they have a very strong research team. So the research team takes their time. Okay. And they properly research things and then they prepare notes for us. I think I cannot do so much of research. So if they are doing it on behalf of me or for me, I'll be very thankful to them and I'll read their notes. Okay. I'll not try to again do all this work again once again. Okay. Be smart in your preparation. And see, many people confuse one thing, that UPSC preparation is not always current affairs. There are two parts of your preparation, static and current affairs. Even if you take the prelims exam or the mains exam, current affairs is not more than 20-30% of your syllabus or the exam scheme. So don't invest too much energy for that 20 to 30%. First, invest your energy in the static part. If you want to clear prelims or mains,
your static part should be very very strong. अगर आपका static part strong नहीं है, तो then it's a gone case. Only current affairs will never help you in UPSC. And if somebody is starting your UPSC preparation, you can start with daily newspaper. उसके बाद read basic NCERTs. NCERTs are like the foundation. अगर आप कोई बड़े से बिल्डिंग देखोगे, every big building has a very strong foundation, and that foundation in our preparation comes only from NCERTs. Okay, so prepare your NCERTs very well and revise it multiple times. Don't make notes out of NCERTs because it will be a very futile exercise, but revise your notes multiple times. Okay. And how do you see number of hours? It depends from person to person. Yeah, strictly speaking, like 8 to 10 hours every day is a very good time, because nobody can really sit for 14, 15 hours until unless when the exam is very near. Like we used to sit for 15, 16, 17 hours when the exam is like in a week, in a month, just like that. But again, relax, relax, sit for 10 to 12 hours per day, give best out of it. But again, I always have believed in a funda that you should be, and there is a strong mind in a strong body, a sound mind in a sound body, which means that you can have a strong mind only when your body is strong. Okay, so only when your mind is strong you'll be able to perform better. And if your mind has to be strong, your body has to be strong. So I used to jog regularly, I used to meditate regularly. Okay, this is one habit that you can learn from me. Do some physical activity every day, which might be running, anything, jogging, running, some yoga, meditation or something, but at least take out some time for your brain in a day. My 6:30 to 8 in the 8 in the evening every day, or 7 to 8 in the evening every day, used to be for myself. I never used to read anything between 7 to 8. I never used to bother. Play badminton, run, jog, meditation. That's it. Nothing more than that. Because you have to give that free time to your brain to relax, or else stress build hota jayega, and it will be a big stress burst as well for me. Okay, इसीलिए take out your time in a day. Don't feel like it is a waste of time, because I can tell you from my experience that is very very essential. If you have to remain in your UPSC preparation for a long time, you have to find some hobby in a day, running, jogging, anything. I used to jog regularly and do meditation. And motivation comes only from when you have that fire in the belly. So you need to have a very very strong desire that I should do this. So try to find out, why do you want to prepare for civil services? If your why is right, and if your why is right, your how will be also right, or you'll find a way to how to do it. So find out, why do you want to crack civil services, or why do you want to join civil services, and then you'll find a way of how you can do it, okay. Social media and YouTube, everything can be used in a positive way. I can only see positive in everything. Okay, but again the problem is, don't get too much depth into the social media. Okay, it is like a very open ocean. You start somewhere and you end somewhere. Okay, so be very very clear about it. It's not necessary to go to Delhi for UPSC preparation. You can sit in any corner. And again, there are many sites and many many shops in Delhi where you can contact them for any material or any notes. Okay, and for in my case, I always used to prepare for other exams and give other exams as a matter of confidence. Like I got multiple jobs, I have, as I told in my introduction. So you can always write other exams, and I would suggest you to write other exams. Always write other exams, because it will give you a sense of confidence when you crack other exams, and you'll also try to understand how other exams are going, so that you can at least have a good understanding of what is happening in a competitive exam, and you'll eventually learn how to handle a competitive exam, because ultimately UPSC is also an exam. You should learn the skill how to manage an exam, or how to handle an exam. Okay, and notes making, as I've told you, make your own notes. For example, ethics. Ethics, how do you prepare for ethics? Take some source like lexicon, read the book 2 to 3 times, and then start making your own notes. And always have examples, 2 3 examples, like ethics, 2 3 examples, morality, 2 3 examples, civil services, 2 3 good examples, commitment, 2 3 good examples. Okay, always have some examples, so that your examples will strengthen your answers.
I'm preparing for Akash Tiwari for 1 year. I have done okay. Optionally is 50% attempt का सोचा था, but कुछ खास cover नहीं हुआ. Now join offline coaching for discipline and systematic. अगर आपने अच्छे से तैयारी किया आकाश, देन अभी की कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है. बट अगेन यू हैव टू चेक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. उसके लिए टेक सम टेस्ट सीरीज, लाइक अपना टेलीग्राम चैनल्स में कहीं पे भी तुम्हें यूपीएससी का मटेरियल मिल जाता है. एंड देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज फ्री यूपीएससी मटेरियल. फ्री यूपीएससी मटेरियल नाम से एक वेबसाइट है, उसमें यू कैन गेट ऑल द मटेरियल्स फ्रीली, सॉफ्ट कॉपीज. उसमें से पिकअप सम टेस्ट सीरीज, check yourself check yourselves and to see अगर if you are able to correct those answers, अगर at least 50% भी सही बन रहा है ना, then don't go for again coaching. Okay. And my interview experience was very good. My interviews, uh, the year I got into IRTS 2018 exam, I scored 190 in my interview, 181 something like that. So वहाँ पे the Manoj Soni sir was a board chairman. Now he is UPSC chairman. So he asked very good questions, and there was one question, because my hobby is cooking. So there was one member who asked a very good question. He said, "See, you are a male, you are a man, and are you not ashamed that you are saying you love cooking?" उन्होंने मेरे को ऐसे ही पूछा कि आपको शर्म नहीं लगता आप एक मेल होके कुक करेंगे? तो आई जस्ट थॉट फॉर अ व्हाइल एंड आई सेड, सर, व्हेन आई एम नॉट ashamed of eating, why I should be ashamed of when why I should be ashamed of cooking? मैंने बस वैसे ही बोल दिया था, सर अगर मुझे खाने में कुछ नफरत नहीं है तो कुक करने में क्या नफरत होगा? सो वहाँ पे दिस आंसर हैज चेंज माय कोर्स ऑफ माय इंटरव्यू, because it was like I very openly stated it, like I follow or I see cooking as a equal activity. It is not limited to women. So वहाँ पे I'm showing what is my kind of personality. Whether I'm saying कि cooking is only a woman's job, I didn't say that. I said cooking is everybody's job. अगर आपको खाना है तो आपको खुद खुद को कुक करना पड़ेगा. So that's how I told my answer. It was a very good thing which I felt. Okay, and that's how there are many questions. And then one of the other interviews, I was asked about my engineering college and engineering life. One more interview, I was asked about my district, Mahabub Nagar, which is a very backward district in Telangana. So labor issues and labor migration. So there are again, topics can range from your own your own background to current affairs. It's a long area, like interview is a very broad area. Questions can come from any corner. Okay. And उसके बाद and the last I can say that UPSC exam, preparing for UPSC exam is really a great achievement, what I can say in my life or for anybody, because UPSC gives you such kind of exposure जो तुम्हें कोई और exam नहीं दे पाएगा. UPSC gives you that kind of exposure which no other exams will give you. And most importantly, how do you improve your English? See, English is a medium of communication. English is not the exam. हम लोग इंग्लिश के लिए एग्जाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज नॉट एन इंग्लिश एग्जाम, दिस इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन. Okay, whatever I'm thinking, I'm trying to convey you in English as a language. Okay, don't go for high-fi English language. Use very very basic English. Okay, जहां तक मैं देखता हूँ, my English is like very very basic English, not high-fi English. I don't know how to use high-fi words. I have very basic Hindi English. अगर if you are also the same person, don't worry, basic English use करो ताकि you can communicate with others. We are not in USA or in Britain. We are in India. English is just a mode of communication ताकि you can speak to other person. So इतना जान लो, and at the same time you have to speak in interview and you have to write in the mains examination. So writing के लिए again basics तो देख लो, and that basic should be taken care when you read the newspapers. So daily when you read newspapers, try to observe the grammar, okay, and try to emulate the same thing. And if you want to learn real English, then go to the NCERTs. NCERTs are school books, which means that they are the basic. They use a very very basic knowledge, basic English. So try to follow NCERT books, and then you can see the sentence framing and the lines written in NCERT books are very very basic. उस उतना लिखना भी बहुत काफी है. Like it is much better than majority of our answers. And then, sir, how you plan for revision during the preparation?
And see, our revision is like extremely important thing. Nobody here is a Rajnikant robo who can remember everything in one go. At least I am not. Okay, I am a very basic or a very normal person जिसको कुछ याद नहीं होता है, and I can only remember things with multiple revisions. So at least I need to look at any topic at least 4 or 5 times, only then I can remember things. And it's a very proved formula that revision will give you excellent results. Okay, that's why I told you in the starting of the session, read one book 10 times, don't read 10 books one time, because you'll be never able to remember it. Reading one book 10 times will give you a good understanding. So iske liye again I go back to my point that fix your sources. Once you fix the sources, those sources will help you to understand multiple times, and ultimately it will enter into your brain. Okay, so that's how it is, guys. And preparing for UPSC is an absolute pleasure, because you tend to understand so many things in your life. इतना ज़्यादा knowledge मिलता है, and you get a perspective of many of the things happening around you. And कहीं पे भी किसी से discuss कर लो, you'll be always superior to them in terms of the discussion, because you prepared for UPSC. Okay, so use this UPSC knowledge in your life as well. Try to apply it whenever you are seeing somebody doing wrong, raise against them. And try to from ethics have learned empathy and compassion towards your society or towards your nature, etc. Okay, so uske baad I have learned more, more about compassion towards my earth or compassion towards nature. So whenever possible, I always try to do something towards the nature, because this is something which has sensitized me. So education sensitizes a person and builds a person. So that's how it has helped me to reshape my personality. In the same way, आपको भी देखो कि कौन सा एस्पेक्ट है जैसे आपके पर्सनालिटी बदल सकती है. ओके, एंड ट्राई टू यूज इट इन योर लाइफ, इन योर फैमिली. ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस. ओके, so that's how UPSC preparation will influence your life as well. So please let me know if you have any questions in the comment section, or else we'll close them. And for anything, you can just message me on my Instagram channel, and I also have a Telegram channel, UPSC Preparation with Shashikanth. So you can just contact there if you have any doubts. Okay, and all the best. So do well, do well. This is a fantastic stage for you to be in the nation building as a civil servant, and there is much scope to work in the civil services, and you can directly contribute to the development of any region, any backward communities, and for the nation. It gives you immense satisfaction. For example, in my one of my recent assignments, I was able to coordinate with the army, and then we have successfully moved them from northeastern part of the country to Jammu and Kashmir within no time. So I was coordinating that. So it gives a sense of satisfaction working with other departments, and directly contributing to the development of the nation. My option was anthropology, and writing के लिए tips यार, देखो वरुण, writing के लिए there are no tips here, because only writing will improve your writing. So this is a complicated statement, but writing will improve your writing. Initially you start writing, आपका स्पीड थोड़ा कम होता है. उसके बाद अगेन यू स्टार्ट राइटिंग डे बाय डे यू कैन सी योर राइटिंग इम्प्रूव्स with your time. And वहाँ पे you should always make sure that you write within stipulated time. अगर 7 मिनट का टारगेट है, fix your timer and write in 7 minutes, and end wherever you are in 7 minutes. So then you can see after writing multiple times, you can understand कि कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे elaborate करना है, so that you can complete your answer within the 9 minutes span. Okay, so this is it, guys. So wish you a happy preparation, and prepare well wherever you are, and be a great asset to the nation wherever you are, in whatever capacity you are, a civil servant, non-civil servant, wherever you are. This is not the only means to serve the nation. There are many other means. Okay, so wherever you are, be proud of what you are doing, and be happy, and maintain your health, take care of your family. Okay, thank you, guys.